नमस्कार। आज टैगोर जयंती समारोह के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आज वैश्विक महामारी के दुर्दिनों में गुरुवर साहस की प्रतिमूर्ति बनकर हमें प्रेरित कर रहे हैं। आइए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और कृतित्व पर जानकारी प्राप्त करते हैं। Good morning, everybody. Yesterday was the birthday of Gurudev Rabindranath Tagore, also known as Rabindranath Thakur. He was born on May 7, 1861. He was a renowned poet, philosopher, artist, and Ayurveda researcher. He wrote many stories, novels, poems, and dramas. He is well known for composing music. His major works include Gitanjali Song Offering, a world-famous poetry book, and Gora. There are 157 poems in this book. All are written in Bengali language. From his book only, the present national anthem of our country was derived. He also composed national anthem of Bangladesh. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize in Literature for his book Gitanjali. In 1915, he was granted knighthood by the British Crown, which he renounced after 1919 Jallianwala Bagh massacre. In 1901, he started ashram in Shantiniketan. In 1940, Oxford University honored him with a doctorate of literature in a special ceremony arranged at Shantiniketan. Tagore was also a cultural reformer and a modernized Bengali art. He was an admirer of Gandhi. He was the one who gave him honorific Mahatma. Filmmaker Satyajit Ray was deeply influenced by Tagore's works. The iconic train scene in Ray's Pather Panchali was inspired by an incident in Tagore's Chokher Bali. During the national movement, he was an inspiring figure and still in the present scenario when we are facing arduous and crucial time, I quote the two lines from his poem that will inspire us all. Freedom from fear is the freedom I claim for my motherland. जय हिंद, जय भारत। वास्तव में डर एक नकारात्मक भावना है। डर हमारी जिजीविषा को समाप्त कर देता है। इसलिए आइए गुरुवर के शब्दों में भय मुक्त भारत का निर्माण करें। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reasons has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. जहाँ मन है निर्भय और मस्तक है ऊंचा, जहाँ ज्ञान है मुक्त, जहाँ पृथ्वी विभाजित नहीं हुई है छोटे छोटे खंडों में, संकीर्ण स्वदेशी मानसिकता की दीवारों में, जहाँ शब्द सब निकलते हैं सत्य की गंभीरता से, जहाँ अविश्रांत प्रयास उसका हाथ बढ़ा रहा है परिपूर्णता की ओर, जहाँ स्पर्श न्याय का झरना खोया नहीं है अपना रास्ता,
निर्जन मरुभूमि के मृत्यु जैसा नकारात्मक रेत के अभ्यास में, जहाँ मन को नेतृत्व दे रहे हो तुम, ले जा रहे हो निरंतर विस्तृत विचार और गति के मार्ग को, ले जा रहे हो वही स्वतंत्रता के स्वर्ग को। हे मेरे पिता, मेरे देश को जागृत होने दो। You're now connected to Boat Film 600. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।